Today I'm going to present in about 20 minutes about Pakistan single window. Normally जब आप public sector पे बैठते हैं तो usually the emphasis is on projection. हमने ये किया, हमने वो किया. अब बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है जो नहीं किया होता वो भी बताते हैं कि हमने किया है. So what I'm going to tell you today is everything that is there on ground, and I have a couple of witnesses with me. Faisal is here, Abdullah is here, has been working from ESDPI with us on a couple of projects. Dr. Saab, of course, is here. It is an emerging success story, one of the few good stories that have come out of Pakistan in cross-border trade in the recent years. And of course, the credit goes also to the public sector, के जहाँ पे public sector के लोग इकट्ठे हुए, and it is emerging as one of the prime examples of what can be done right when the public sector officials band together and make a determined, decision to go ahead for improving public policy or implementation. Pakistan single window is also something like that. आप में से कितने लोगों ने ऐसे PSW का नाम पहले सुना हुआ है? यहाँ से पहले Sara, of course, that's a pretty good number. And I was pretty surprised. I was in the morning, I was at a session in NDU, वहाँ पे भी मैंने सवाल पूछा, and there were quite a few people who actually knew that. एक ज़माने में जब हम सिंगल विंडो की बात करते थे, लोग समझते थे कि हम कोई फिजिकल विंडो बना रहे हैं, या हम कोई वन स्टॉप शॉप बना रहे हैं, या वी आर गोइंग टू बी लाइक नादरा, nice offices, nice executive staff, you go there, stand in queues and get your work done. Single window is nothing like that. We have absolutely no footprint on the borders, on the dry ports, airports, seaports. It's a very small company. We are registered under Section 42. हम एक public sector entity हैं, but it has a very innovative, unique governance and operating model. उस पर हम बात करेंगे. That is also something that probably could help contribute the discussion on how SOEs can be managed better. I don't report to the chairman FBR, and I will let you know why. But let's go on some quick facts. Pakistan signed the World Trade Organization's Trade Facilitation Agreement, and under that agreement there are a number of commitments that Pakistan, like every other country, has made. The single window is covered under Article 10.4 of the Trade Facilitation Agreement. इस agreement के तहत हमने 5 साल के अंदर single window establish करनी थी. The agreement came into force in 2017. Lead agency for the Pakistan single window is Pakistan Customs. Pakistan Customs has had an extremely important role in conceptualizing the project, steering it through the inception phase and bringing it to this place. And then it has started dissociating. This is again a prime example of, and a very rare example in Pakistan's public sector, where an agency would willingly cede some of its authority and power to let somebody else do the job. Single window company is, like I mentioned, Section 42 company, but we have another term that's called operating entity. We are the legally notified operators of the Pakistan single window system. The scope of the project, basically the single window platform is a data exchange platform. It aims at reducing the time and cost of doing business. But what we do different from most of the single windows around the world is in terms of its scope. We are just not covering business to government processes. We are also covering business to business and government to business processes. अगर आप लोगों को बाहर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पे कोई कॉन्फ्रेंस इवेंट अटेंड करने का मौका मिले तो काफ़ी सारे मुल्क ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने सिंगल विंडो बनाई है. Actually what they have developed is just a computerized customs clearance system. Very few countries in the world have come up with a true single window, what we call a true single window, and that is where we are heading to. 30 जून 2022 को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी से अपना रोल आउट अचीव किया. फेज़ 1, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान कस्टम्स, 29 कमर्शियल बैंक्स और 5 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट किया है फुली. According to World Bank and IFC, full implementation of the single window will result in a very conservative estimate of $430 million per annum savings to the trade in terms of reduced documentation and less time that they spend in complying with border and regulatory compliances. Sponsors, अभी तक इस प्रोग्राम पे सिंगल विंडो पे हमारे I will let you know $5.5 million लगे हैं against a budget of $67 million. Compare that to the single window that UK is building, for which they have allocated about £210 million or something. And the primary sponsorship for the single window has come from the government of Pakistan, Pakistan Customs itself, and the development partners. One of the things that we usually highlight during our talks on single window is how we have leveraged different donors to ensure that
it results as a multi-donor collaborative effort and there's no duplication or replication. It's a very strong private sector collaboration in whatever we do. Global trade, this is just a reference slide. I'm not going to spend too much on it. $31 billion की global trade हुई है 2022 में. This was a 13% increase compared to 2021 after the pandemic. और उसके अंदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की ट्रेड जो है वो 63% है. $15.2 ट्रिलियन की ट्रेड होती है. These figures I got from the latest edition of the WTO Trade Statistical Review. But international trade is a very messy business. अभी बिल्कुल रिसेंटली इस पे फोकस हो रहा है कि इंटरनेशनल शिपिंग से पोल्यूशन पे कितना कंट्रीब्यूट होता है. बट इवन अदरवाइज इंटरनेशनल ट्रेड जनरेट्स अबाउट 28.4 बिलियन डॉक्यूमेंट्स पर एनम. And we talk about documents, it's just not about the paper submission process that a trader has to do to get their compliances and clearances. Just think also about the storage, the archiving, the maintenance of records, and most important of all, what is going on with the data that is on those papers. Very few countries have that capability कि जहाँ पे वो paper based record से data extract करें. India is probably one of those countries that has excellent record keeping based on even manual records, but most of the countries can't use that data. 30% of total time on global trade is spent on processing documents. $150 billion are estimated to be lost owing to manual methods in the global trade. पाकिस्तान के लिए हमारे पास ये numbers available नहीं हैं, but we do know from an analysis of the data that Pakistan applies regulations are applied on about 67% of all import good declarations. जब आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, आपको कस्टम्स का डिक्लेरेशन फाइल करनी है. तकरीबन 1.8 मिलियन डिक्लेरेशंस पर एनम फाइल होती हैं. 67% पे कोई ना कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस है और ये तकरीबन 77 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं. एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिवली हमारी ज़्यादा लिबरलाइज्ड हैं, उसके बावजूद 12% उसके ऊपर आपको कोई लाइसेंस, परमिट या सर्टिफिकेट चाहिए होता है. सो व्हाट इज सिंगल विंडो? वेरी क्विकली, सिंगल विंडो की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी. वी टुक अप द डेफिनेशन फ्रॉम UN CFACT रिकमेंडेशन नंबर 33 है, उसको हमने अपने लॉ में भी इनबिल्ट किया है. बेसिकली इट्स अ फैसिलिटी दैट अलाउज पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट टू लॉन्च स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन विद अ सिंगल एंट्री पॉइंट. स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब आप गवर्नमेंट के पास कोई कंप्लायंसेस कर रहे हैं तो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड स्पीक द सेम लैंग्वेज. कस्टम्स जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कहता है, KPT उसको कार्गो बुक कहता है. और जब आप टर्मिनोलॉजी डिफरेंट यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप एक सेम लैंग्वेज ही नहीं बोल रहे. तो पार्ट ऑफ द सिंगल विंडो रिफॉर्म ये भी होती है कि आप सारी ट्रेड टर्मिनोलॉजी को स्टैंडर्डाइज और हार्मोनाइज करते हैं. सो द रिकमेंडेशन 33 ऑल्सो सेज दैट द सिंगल विंडो शुड बी अ फैसिलिटी जहाँ पे स्टैंडर्डाइज इन्फॉर्मेशन हो रही हो. ये बिल्कुल वैसा प्रोसेस है जिस तरह आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपको पता होता है कि वीज़े के लिए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन हर मुल्क क्या मांग रहा है. Same, the importer exporter should know the standard documentation क्या है. And if the single window is electronic, then data elements should only be submitted once. जो information आपसे मांगी दोबारा नहीं मांगी जाएगी. मेरा कुछ अर्सा पहले नादरा जाने का इत्तेफाक हुआ. I wanted to issue an ID card for my daughter जो कि A levels के एग्ज़ाम में appear हो रही थी, O levels में. And नादरा asked me a number of documents जिनमें से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वो थी जो नादरा ने खुद इशू की. उन्होंने मुझसे शनाख्ती कार्ड की कॉपी मांगी, उन्होंने मुझसे इस तरह की डॉक्यूमेंट्स मांगी और मैं चूँकि पूछता मतलब आई वर्क ऑन दिस, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझसे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी क्यों मांग रहे हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं. दे शुड बी इन द सिस्टम. सो दैट हैज़ बीन अ लर्निंग पॉइंट फॉर अस. हमारे सिस्टम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है. आप एक दफ़ा जब अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जब तक आप उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे हम इन्फॉर्मेशन दोबारा नहीं मांगेंगे. विजुअल रिप्रेजेंटेशन सिंगल विंडो की, आई एम सॉरी इफ इट सीम्स लाइक अ वेरी immature or something, but I found this is the best way to explain कि सिंगल विंडो करता क्या है. हमारे पोर्ट्स पे, चाहे वो ड्राई पोर्ट हों, सी पोर्ट्स हों, लैंड पोर्ट्स हों, दिस इज सिचुएशन. सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अराउंड द वर्ल्ड जनरली होता है कि देयर इज अ ट्रेडर हु इज कार्टिंग इन्फॉर्मेशन. नंबर ऑफ डिफरेंट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, कस्टम्स है और बहुत सारी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, स्टैंडर्ड्स की एजेंसी है, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बैंक्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए और वही इन्फॉर्मेशन मल्टीपल टाइम्स एजेंसीज को प्रेजेंट की जाती है. व्हेन वी वर डेवलपिंग द सिंगल विंडो, आई वेंट टू अ गवर्नमेंट एजेंसी जहाँ पे 2 क्लर्क्स आमने सामने बैठे हुए थे और वहाँ पे एक एप्लीकेंट 200 पेज की एक फ़ाइल उसने एक क्लर्क को दी और आइडेंटिकल फाइल दूसरे क्लर्क को दी. और मैंने उनसे पूछा कि आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं कर रहे. उन्होंने कहा कि जी हम एक सेक्शन में पोस्टेड नहीं है. सो दैट वाज अगेन समथिंग व्हिच डजंट sit well with any idea of modernization. What the single window does is clean up the whole mesh
of data exchange that is going on in an uncoded manner. So you have the single window system in the middle. It cleans up all the relationships. You get transfer information to a central platform, and then single window would transmit it to different entities, whether they are public or private, according to their roles and privileges. जो इन्फॉर्मेशन जिसको नहीं दिखानी वो नहीं दिखाई जाती. फॉर एग्जांपल कस्टम्स की वैल्यूज़ को हम प्रॉब्ली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को नहीं दिखाएंगे या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ को नहीं दिखाएंगे, वाइस वर्सा. डिपेंड्स के हर मिनिस्ट्री और एजेंसी का आपस में प्रिविलेज क्या है डेटा शेयरिंग का. पाकिस्तान सिंगल विंडो की जो स्टोरी है दैट स्टार्टेड इन 2017, एंड आई यूजुअली शो दिस स्लाइड बिकॉज इट्स ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फ्यू केसेस जहाँ पे the government has not rushed into a program. There's a quotation जो I recall नसीरुद्दीन ये हुमायूं किंग के बारे में, मुगल बादशाह के बारे में कहते थे कि he tumbled into life and then tumbled out of it because he was born when I don't know during Babur's one of many journeys and he died after falling from the stairs. ऐसा पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोग्राम्स में होता है. आप जल्दी में एक प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं शॉर्ट टर्म में क्विक विंस के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन इट फेल्स. सिंगल विंडो हैज बीन अ लिटिल बिट डिफरेंट. 2017 में वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड नाउ वी आर इन 2023 डिस्पाइट द चेंज ऑफ सेवरल गवर्नमेंट्स, several finance ministers. The ownership of the program is still there. We have not suffered from a lack of political ownership, and when I say political ownership, it's just not the politicians and the government. I also mean the ownership that the government agencies have, the ownership that the private sector has, because we worked really hard on developing consensus on what the single window would mean. Or I think we did something right that we are still steaming ahead with that support. 2018 से 2020 तक हमने फाउंडेशनल स्टडीज़ की. वी लुक्ड एट ऑल दी सिंगल विंडोज़ अराउंड द वर्ल्ड कि क्या चलता है क्या नहीं चलता, कहाँ पे लेसन्स लर्नड हैं. सिंगल विंडो इन श्रीलंका फॉर एग्जांपल हैज़ फेल्ड ट्वाइस. Malaysia is still struggling to set up their single window. So single window has not been a success story everywhere. 2021 May we came up with the governance and operating structure that was notified under the Single Window Act, and phase 1 rollout was successfully achieved in 2022. Alhamdulillah, we notified the WTO that we have complied with the commitment in time. ये हमारी करंट सर्विसेज हैं. हम इस वक्त FPR, पाकिस्तान मोबाइल डेटाबेस, नादरा बैंक्स, SECP के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं. पहले सिंगल विंडो के आने से पहले अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी होती थी, आप पाकिस्तान कस्टम्स के वीबॉक्स सिस्टम में रजिस्टर होते थे, 22 डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे, 5,000 रुपये की फ़ी पे करते थे. नई तरह कोई जानने वाला होता कस्टम्स में तो आपको शायद एक दिन में वीबॉक की ID इशू हो जाती, वरना आप यू वुड स्टैंड इन द क्यू, गेट योर बायोमेट्रिक्स डन, टेक अ फोटोग्राफ एंड फिर उसके बाद आपको ID मिलती थी. अभी अंदर सिंगल विंडो इट टेक्स अंडर 20 मिनट्स, especially if you are wise enough like most of the customs clearing agents are to apply from a नादरा कियोस्क जहाँ पे आपने बायोमेट्रिक के लिए जाना है. तो 500 रुपये फ़ी है फॉर दी ID, 250 रुपये आपकी नादरा के बायोमेट्रिक की है, एंड दैट्स इट. The data gets automatically verified from all of these sources जो आपको नज़र आ रहे हैं, and you are good to go. 29 commercial banks are integrated. I, as CEO PSW, have more visibility over international trade, remittances, and finance than the governor of the central bank has at the moment. Everything is coming to the system. We have integrated 10 government agencies with us. Integration में इनका cross border trade सारा का सारा digitized है. No manual processing, no scanned documents. Everything is structured. You go on the platform, apply for any license permit, you get an electronic copy, QR code enabled. We have also launched the Trade Information Portal of Pakistan. There was another commitment with the help of World Bank. बनाया customs के लोगों ने इसको, and this is being quoted as one of the best practice examples in the region of the Trade Information Portal. Complete guidance है import, export और transit के लिए, along with maps. ये किसी वक्त explore करें आप लोग, मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको दिखा दूँगा. And then, of course, the private sector is also being integrated. So we have labs, we have fish inspection companies, we have fumigation companies who are a part of the single window system. As a trader, you have a choice. अगर आपको एग्रीकल्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपने फ्यूमिगेशन करानी है, आपके पास सारे सर्विस प्रोवाइडर्स आएंगे. यू मेक अ चॉइस कि आपने किससे सर्विस लेनी है, ऑनलाइन पेमेंट करें. उसी जगह पे ऑनलाइन ही रिपोर्ट भी आ जाती है, एंड यू डोंट रियली हैव टू विजिट एनी ऑफिस. पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स. Single window is like a big umbrella, and under it there are a number of different components. We hope to, inshallah, roll out the port community system this year. Another country's port community system is developed by the Ministry of Maritime Affairs.
हमारे केस में हमने इसको अंडर द सिंगल विंडो इनिशिएटिव लिया है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिंगल विंडो फॉर मैरी टाइम ट्रैफिक. द पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम इंटीग्रेट्स फ्रेट फॉरवर्डर्स, शिपिंग लाइंस और पोर्ट अथॉरिटीज़, टर्मिनल ऑपरेटर्स, ट्रेडर्स, जितना कुछ सी पोर्ट के ऊपर ट्रैफिक है वो सारा पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम में आता है. इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज इन प्रोग्रेस इन कोलैबोरेशन विद अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी. एयरपोर्ट कम्युनिटी सिस्टम हम डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि हम अगले साल से इम्प्लीमेंट करेंगे. ड्रैप इंटीग्रेट हो रहा है इस वक्त, हम कुछ मॉड्यूल्स रोल आउट कर चुके हैं. इट्स अ बिग गवर्नमेंट एजेंसी, would take about 1.5 years to 2 years to be fully integrated. The work is on. And we are also working on digitization of bank guarantees, insurance guarantees जो कि cross-border trade में ली जाती हैं. Some of the notable outcomes, it's important to also blow our trumpet. हमने किया क्या है, 71,000 सब्सक्राइबर्स हमारे पास हैं out of an estimated 80,000 नंबर जो कि cross-border trade में इन्वॉल्व हैं. Of course, there is 8 to 10% growth every year. 100,000 से ज़्यादा लाइसेंस, परमिट, सर्टिफिकेट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स हम पर एनएम प्रोसेस कर रहे हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के. एंड बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज इमर्ज हो रही हैं हमारे पास. फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ डिपार्टमेंट जिसके सिंगल विंडो में आने से पहले नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो सालाना प्रोसेस हो रहे थे वो 3.5 लाख थे और उनकी जो इनकम थी वो तकरीबन 18 मिलियन थी. सिंगल विंडो में आने के बाद नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिर के आ गए तो 1.5 लाख पे और रेवेन्यू शूट अप कर गया 300 मिलियन पे. सो वी आर स्टिल लुकिंग एट व्हाट इज़ गोइंग ऑन. पता ये चला कि सिंगल विंडो आने से पहले बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स नीचे से ही इशू हो जाती थी और गवर्नमेंट के इदारे को पता ही नहीं चलता था कि ये लाइसेंस या सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, ना ही वो पैसे गवर्नमेंट ट्रेजरी में आते थे. आप चूँकि सिंगल विंडो रोकता है, कंसाइनमेंट को जाने नहीं देता जब तक ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, तो उनकी इन्फोर्समेंट बढ़ गई है. We have successfully implemented trade facilitation agreement के 3 provisions: single window itself, trade information portal, and now we are transitioning the inquiry point. Inquiry point is a kind of contact point के जहाँ पे अगर आपको किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए हो तो आप ले सकें. अदर दैन कस्टम्स बाकी डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी आपको ऑन कॉल, ऑन ईमेल या अदरवाइज वेबसाइट पे अवेलेबल हो. Because of these efforts, हमारा UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation पर स्कोर बढ़ा from 56% to 70%. इस साल ही ये हमने अचीव किया and Pakistan on this was actually ahead of India. If that is some consolation that we did much better than India on this survey. Data visibility, I've already spoken about. One of the things that we are doing is international data integration. Pakistan single window is now connected to China single window. And we are now in that phase के जहाँ पे हम डेटा एक्सचेंज करना शुरू करें. In the first phase, we will be exchanging data on phytosanitary certificates, followed by certificates of origin, and in the third phase, we come to customs declarations. China is very conservative on exchanging their customs data, but they have relented that they would share that data with us. We hope that once we get it, जो अंडर इन्वॉइसिंग की प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो थोड़ी सी मिटिगेट होगी. Change management is something that we have embedded in the company itself. हम तकरीबन 500 से 700 लोगों को मंथली बेसिस पे ऑन एवरेज रीच आउट करते हैं. ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, अवेयरनेस सेशंस हैं, ऑनलाइन, ऑन साइट. जनरली पब्लिक सेक्टर में चेंज मैनेजमेंट नहीं होती, बट दिस इज समथिंग अलॉन्ग विद M&E, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जो कि हमने कंपनी में एम्बेड किया हुआ है. वी हैव ऑल्सो द सिंगल विंडो हैज़ सक्सीडेड इन मेकिंग सर्टेन लीगल चेंजेस. कस्टम्स लॉज हैव बीन अमेंडेड. स्टेट बैंक का FE मैनुअल पूरा अमेंड हुआ बिकॉज ऑफ सिंगल विंडो. इसके अलावा हमने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा पे काम किया है. सो वी हैव नाउ गॉट एन SRO इशू जिसमें जो ट्रेड डेटा है दैट इज़ नाउ एक्सेसिबल टू एवरीवन. आप लोगों को अगर रिसर्च करनी है, जस्ट गो टू द ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल ऑफ पाकिस्तान. पिछले 3 साल का डेटा आपको वहाँ पे मिलेगा HS कोड के साथ. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन दैट वी आर नाउ disseminating for research purpose, for marketing purpose and all that. As इसको डिजिटाइज करेंगे तो आप मैनुअल प्रोसेस की इनएफिशिएंसी को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर देंगे एंड दैट इज़ इवन वर्स. मैनुअल में तो आप कागज़ पे लिख के कोई डिस्पेंसेशन दे सकते हैं. एक दफ़ा कोई बंदा IT सिस्टम में फंस जाए तो वहाँ पे नहीं होता. सो वी वर्क विद ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज एंड वी वर्क ऑन द बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग. सो फार 10 डिपार्टमेंट्स जो हमने किए उनके 111 क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रिलेटेड प्रोसेस हमने रीइंजीनियर किए. 83 डॉक्यूमेंट्स को वी हैव रिप्लेस्ड विद इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन. 145 में इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन है और 46 डॉक्यूमेंट्स हम सिस्टम से एलिमिनेट कर चुके हैं. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स. पॉलिटिकल ओनरशिप पे मैंने शुरू में बात की. देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओनरशिप. हमें रिसेंटली ये थोड़ा सा एक स्ट्रगल करनी पड़ी है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी रेफ़र किया कि गवर्निंग काउंसिल जो है पाकिस्तान सिंगल विंडो की, उसकी मीटिंग्स नहीं हो रही. गवर्निंग काउंसिल को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हेड करते हैं. इट कंप्राइजेज ऑफ
secretaries of all the key ministries that are part of the single window system. For private sector people, मर्स्क की MD हैं, उसके अंदर फौजी फर्टिलाइज़र की CEO हैं, डॉक्टर साहब हैं, इसके अलावा हमारे IT सेक्टर की एक रिप्रेजेंटेटिव उसमें बैठती हैं. I am also part of the governing council. So that meeting has not taken place since March last year because of the political situation. But fortunately we had some foresight. तो हमने बहुत सारे जो key decisions थे वो पहले से governing council से करवा लिए थे, या हम कुछ circulation की basis पे कराते हैं. तो we are not really dependent on the governing council meeting physically for those decisions. But generally we have had very good level of support from the government. Legal framework is something that has been a truly innovative aspect of the single window Pakistan. We came up with a new law which is called the Pakistan Single Window Act 2021, and now we are being consulted from different countries around the world of how we have done that, because if you look at other countries, usually they provide the legal basis for single window operations either through changes in the in the customs laws or in the maritime affairs laws. हमारे केस में सिंगल विंडो एक्ट अलग से बना है. सिंगल विंडो एक्ट पे इन पासिंग मैं आपको बता दूं कि 3 बड़ी मेजर सिंगल विंडो एक्ट की फीचर्स हैं. नंबर 1, अंडर द सिंगल विंडो एक्ट जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने सिंगल विंडो के अंदर आना ही आना है, जो क्रॉस बॉर्डर को रेगुलेट कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस के दायरे क्यों ना हो. देयर इज़ नो वेवर, दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिंगल विंडो सिस्टम. सो दैट वाज डिज़ाइन टू एलिमिनेट टर्फ वॉर्स बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज. जुरिसडिक्शन के जो इशूज़ आते हैं उसको हमने उस तरीके से एड्रेस किया. नंबर 2, which is very important, all the government agencies including customs are required to align their laws, processes, procedures, information requirements and documentary requirements with single window. तो एज ए सिंगल विंडो अगर हम ये कहें कस्टम्स को कि आपके फलाने प्रोसेसेस बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन नहीं कर रहे, तो एज अंडर द लॉ दे आर बाउंड टू चेंज दैट. दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ पावर विच वी डोंट यूजुअली यूज बिकॉज अभी तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, बट दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ अथॉरिटी अंडर द लीगल अथॉरिटी के हम चैलेंज कर सकें. और तीसरी बात इसके अंदर ये है कि ओवरराइडिंग पावर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की अगर बाकी गवर्नमेंट के डिफरेंट लॉज में प्रोविजन नहीं है तो सिंगल विंडो कवर करता है. इसी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा आप इससे कर लें कि स्टेट बैंक के जो लॉज हमने चेंज किए हैं वो 1947 और 49 से डेट करते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का लॉ लास्ट टाइम जो अपडेट हुआ है मेरी नॉलेज में वो 1970 का हुआ है, और कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि बहुत पुराने हैं, शायद प्री पार्टीशन, तो उसमें सिंगल विंडो एक्ट वो कवर करता है. There is a tiered governance and operating model. As a CEO of the single window company, I work under corporate governance rules. मैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता हूँ, अगेन जिसके अंदर 4 लोग गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, बट बाकी FPCCI और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के नॉमिनीज भी बैठे हैं, और मैं अंडर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स उन्हीं की पॉलिसी के अंडर आता हूँ. अदर दैन दैट आई डोंट रिपोर्ट टू एनी अदर ब्यूरोक्रेट. So I'm very independent of PSW is very independent of FPR or customs in that sense. Lead agency is customs, so whenever we need to get an SRO issued or need to do any communication with the government or the parliament or the cabinet, of course as a company I can't do that. That is where customs comes in. Customs के कुछ और भी functions law में defined हैं. हम और customs आपस में बंधे हुए हैं. अगर single window flop होती है तो repercussion custom पे है, अगर सिंगल विंडो कामयाब होती है तो उसका फ़ायदा कस्टम्स को है. फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि अगर हम 3 साल तक अपने बेंचमार्क्स मीट ना करें तो लीड एजेंसी कस्टम्स की जगह कोई और गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हो सकती है. सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम फ्रॉम कस्टम्स, लॉ डेवलप करते हुए हमने कस्टम्स के ऊपर भी ये चेक एंड बैलेंस रखा कि अगर हम इस वजह से नहीं सक्सेसफुल होते क्योंकि कस्टम्स ने रजिस्ट किया, तो फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज किसी को भी सिंगल विंडो दे दे कि आप चला लें. सो दैट एक्चुअली कीप्स एवरीवन मोटिवेटेड कि हमने काम करना है. एंड देन एट द टॉप ऑफ द लीड एजेंसी इज द गवर्निंग काउंसिल. गवर्निंग काउंसिल का मैंडेट कंपनी नहीं है, गवर्निंग काउंसिल का मैंडेट सिस्टम है. सिस्टम की सुपरविजन, ट्रबल शूटिंग, कोई गवर्नमेंट एजेंसी रजिस्ट कर रही है उस पर बात करना. एंड दे ऑल्सो मॉनिटर आवर परफॉर्मेंस के सिंगल विंडो के अपने बेनिफिट्स पास ऑन कर भी रहा है. Another reason that we are relatively more successful is an incremental approach towards implementation. हमने big bang नहीं किया. We could have done a big bang, but we took our own sweet time to come up with our software. सारा हमने internally develop किया है, कोई off the shelf solution नहीं है. And then we have been very very conservative in our approach towards implementation. हम जब किसी government agency को integrate करते हैं तो one go में नहीं करते. There is always in parts and pieces. And then we also have a very elaborate process of change management.
to make sure that there is no resistance coming in from those government departments as well as from the trade. Consultation, collaboration, coordination are the 3 C's जो कि हमारे guiding principles हैं. जितने भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जितने भी प्रोसेस डिज़ाइन कर रहे हैं, उस पर सिंगल विंडो खुद जाके सोल्यूशन प्रपोज नहीं कर रहा. वी वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वी वर्क विद द प्राइवेट सेक्टर पीपल कि दिस इज़ द प्रोसेस, इसमें इस वक्त ये प्रॉब्लम है, हम ये सजेस्ट करते हैं इसको ठीक करने के लिए, आप लोगों की क्या टेक है. एंड दैट हेल्प्स अस टू क्रिएट ओनरशिप. इवन ये लॉ जिसका मैंने आपको कोट किया है, इस पर 77 गवर्नमेंट इदारों के सिग्नेचर्स हैं. उनकी ओनरशिप है इस लॉ के ऊपर. सिंगल विंडो के पूरे सिस्टम के ऊपर हम कहीं ये क्लेम नहीं करते कि सिंगल विंडो ने बनाया. इट्स ऑलवेज ड्रैप, इट्स ऑलवेज कस्टम्स, इट्स ऑलवेज डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, एनिमल क्वारंटीन that have designed the system. And then we combine corporate, public and development sector practices. So we are corporate under the law, but we are public sector agency and we have certain elements of development sector embedded. So we have, like I said, an M&E function, a change management function. We have a very strong digital transformation office, a very strong project management function. और accountability बहुत ज़्यादा सख्त है, हम अपनी accountability खुद भी करते हैं. What next? This probably is the last slide. हम करना क्या चाह रहे हैं आगे? So ख्वाहिशें तो हज़ारों होती हैं. We are a company that does not want to excel within Pakistan. We have global aspirations. We want to be the best in the business on the global level. Some of the things that we are working on are displayed here in the slide. We would be integrating emerging technologies, especially AI, on the risk management system. रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान कस्टम्स यूज़ करता है. अंडर सिंगल विंडो हमने उसको बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है. फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्रीकल्चर इंपोर्ट करते हैं तो पहले आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन से जाके इंपोर्ट परमिट लेना पड़ता था. अब तकरीबन 60% ऑफ द इंपोर्ट परमिट सिस्टम के अंदर खुद ब खुद इशू हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ द ट्रेडर. So this is actually a very landmark, significant achievement जो हम कर पाएँ कि हम एक ऐसे डिपार्टमेंट को जहाँ पे ऑटोमेशन बहुत कम लोग जानते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में हमको ट्रांजिशन किया विद फुल सपोर्ट. एंड इन द कमिंग फ्यू मंथ्स हम एनिमल क्वारंटीन, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी को भी इस सिस्टम के ऊपर ले आएंगे. एंड देन नेक्स्ट स्टॉप वुड बी ANF. We are supporting government agencies in automation. EPZ has requested us to develop their core processes. We have asked them to float a tender. हम उस पर bid जमा करा चुके. But other than that, there are government agencies who have requested. BUI wants us to develop the single portal for business and investment. SIFC जिसका आजकल बहुत चर्चा है, that borrows a lot of terminology from the single window initiative. सिंगल विंडो की ट्रेड लैब हम SDPI के साथ इंशाल्लाह दिसंबर में हम लॉन्च करेंगे. होपफुली द ट्रेड लैब इज़ एक्चुअली एन ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल जिसके अंदर जितने भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कोर्सेज, मैंडेटरी कोर्सेज सारे के सारे हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं. कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि गवर्नमेंट मैंडेट करती है. इफ़ यू वांट टू बी अ कस्टम्स एजेंट, कस्टम्स ब्रोकर, यू नीड टू टेक सर्टेन एग्जाम. वी प्लान टू शिफ्ट दैट ऑनलाइन. ऑनलाइन एग्जाम दें, ऑनलाइन रिजल्ट्स निकालें, एंड दैट्स इट. वी वुड लाइक टू एलिमिनेट ऑल दी फिजिकल प्रोसेसेस फॉर एग्जाम्स एंड ऑल दैट. पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं. फैसल भट्ट, माय कॉलीग हियर, इज़ द प्राइवेट सेक्टर स्पेशलिस्ट हु वी काइंड ऑफ हेड हंटेड and brought him from the Ministry of Commerce. He's working with me on e-commerce integration, on SMEs, postal services की integration पे. इसके अलावा हमारे प्राइवेट सेक्टर की कुछ पार्टनरशिप्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव कम अप विद अ प्रोडक्ट जो कि हम बैंक्स को ऑफर करने जा रहे हैं टू इम्प्रूव देयर कंप्लायंस अंडर FATF. वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद सर्टेन अदर प्रोडक्ट्स जहाँ पे हम B2B रिलेशनशिप्स को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज करेंगे. बिग डेटा एनालिटिक्स पे हम बात कर रहे हैं. देयर इज़ टन्स ऑफ डेटा फ्लोइंग थ्रू आवर सिस्टम. इतना डेटा है कि आप वो समझ नहीं आती आप उनके साथ करें क्या. और उस डेटा में जो स्टोरीज़ हैं मल्टीपल किस्म की, you know, it's a totally different world. We don't have the capacity even under a single window कि हम उस डेटा को किसी मीनिंगफुल फॉर्म में प्रेजेंट करें पॉलिसी मेकर्स को, रिसर्चर्स को, थिंक टैंक्स को. इस वक्त अगर आप हमसे डेटा मांगे हम आपको रॉ स्ट्रक्चर में डेटा दे देंगे और देन यू वुड बी आस्क्ड टू डू योर ओन स्टफ आउट ऑफ इट. बट वी आर डेवलपिंग दैट कैपेबिलिटी. वी हैव गॉट फंडिंग फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक. वी आर ट्रांजिशनिंग आवर सिस्टम टुवर्ड्स Oracle. और हमारा ये प्लान है कि one baby step at a time, but by the end of 2024, if all goes well, inshallah, we should be in a position कि जहाँ पे हम
प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में डेटा एटलीस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ शेयर करना शुरू कर दें. We want to be an ideas hub. We don't want to develop the software ourselves, so we are working with Systems Limited. We are working with other industry leaders in the IT sector, और हम अपने काम को outsource करते हैं. Very briefly, when I was working on single window development, we got some pushback from Pasha, for example. They had some reservations कि हम उस space में क्यों आ रहे हैं जो कि private sector का है. And we take a lot of care in that कि कुछ जगहों पे it's our कंपल्शन कि हमने काम खुद करना है. रिस्क मैनेजमेंट हमने खुद डेवलप करना है. कस्टम्स का ट्रेड डेटा सेंसिटिव है, हम किसी आउटसाइडर को एक्सेस नहीं दे सकते. बट फॉर ऑल द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिंगल विंडो वी आर वेरी ओपन टू आउटसोर्सिंग, स्टाफ ऑगमेंटेशन, टर्नकी प्रोजेक्ट्स, और वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. दिस इज़ अगेन अ फ्लेक्सिबिलिटी दैट आई हैड अंडर द कंपनी मॉडल. अंडर द 100% पब्लिक सेक्टर मॉडल आई couldn't have that. One last point is gender. When I talk about gender to my senior colleagues in my erstwhile department and with other friends, तो थोड़ा सा एक पुश आता है कि जेंडर का क्या ताल्लुक है सिंगल विंडो के साथ, क्यों आप ये काम कर रहे हैं. बट वी आर वेरी एक्टिव ऑन द जेंडर. वी आर द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी इन पाकिस्तान दैट कंडक्टेड अ जेंडर ऑडिट, जिसमें हमने अपनी पॉलिसीज़ का भी ऑडिट कराया जो उस वक्त तक बनी हुई थी, और सिस्टम का भी ऑडिट कराया. बेस्ड ऑन दैट ऑडिट हमने रिकमेंडेशंस ली कि हाउ कैन वी मेक not only a workplace more inclusive, but also the system more friendly to women entrepreneurs. So हम recommendations को implement कर रहे हैं. अगर आप हमारे social media के profiles पे देखें, YouTube, LinkedIn, आपको वहाँ पे बड़ी presence नज़र आएगी हमारी female staff की, projection नज़र आएगी, because one of the recommendation was कि आप जब अपनी advertisements करते हैं तो they should be in a way कि जहाँ पे women candidates encourage हों काम करने के लिए. They should know what kind of a work culture is there in place. We launched the Khatija Women Entrepreneurship Program last year in December. हमें ये लगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे डोनर्स काम करते हैं बट दे कम एंड गो एंड कुछ सस्टेनेबल एफर्ट नहीं है. TDAP works a lot on this. They do an excellent job. So we have started working with different government agencies. हमने कहा हमारा ये स्ट्रक्चर है कि हम सस्टेनेबल बेसिस पे कर सकते हैं. Under the entrepreneurship program we focus on cross border trade. बिल्कुल बेसिक लेवल की ट्रेनिंग भी दे देते हैं कि बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल पे भी चले जाते हैं कि LCs कैसे नेगोशिएट करनी है, कुरियर के पास कैसे आपने अपना काम करना है. Under our CSR program, we hope once we have that fiscal space available that we would be sponsoring at least 2 women every year to get a course or a degree on supply chain or any other trade related program. उसके लिए नस्ट वालों से भी हमारी बातचीत चल रही है. कुछ और गवर्नमेंट के नॉन गवर्नमेंटल इदारे हैं जिनके साथ हम बात कर रहे हैं कि आप हमें बताएं आपके प्रोग्राम्स क्या हैं, we would like to sponsor. We have also started working on the Green Customs Initiative. We're also looking at the impact that single window has on environment. So there's a lot of work that we are doing other than hardcore technical work. But this is the last slide. Digital transformation एक jargon है. इस वक्त भी आप government sector में जाएं, a lot of people will be talking about digital transformation, automation. Unfortunately, a lot of those efforts are not successful. और अपने तजर्बे की बेसिस पे आई हैव bulleted these 5 points कि if the people in the organization lack the right mindset to change, or if the needs of the organization employees have not been taken into account. हम कस्टम्स में ऑटोमेशन कर रहे थे, there was a lot of resistance because उस वक्त ये लग रहा था कि कस्टम्स के लोगों की अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, डिस्क्रेशन ख़त्म हो जाएगी. कस्टम्स ऑटोमेट बहुत पहले हो गया था. प्रॉपर डिजिटाइजेशन 2000 ऑनवर्ड्स हुई. I'm sure डॉक्टर साहब भी would support me on that. कस्टम्स के लोगों की जॉब सिक्योरिटी पे, उनके काम पे, उनके मैंडेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. Actually they have been more empowered because now they have that whole data set available with them जहाँ पे वो डिसीजन ले सकते हैं. जनरली IT के प्रोजेक्ट इसलिए फेल होते हैं कि वेंडर्स, हम भी एक सॉर्ट ऑफ वेंडर ही हैं. व्हेन वी गो हम अपना सोल्यूशन इम्पोज करने की कोशिश करते हैं. वी डोंट लुक एट द कंसर्न्स एंड रिजर्वेशंस. रेजिस्टेंस आ क्यों रही है, व्हाट इज़ द कंसर्न ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉई. So that is the recipe for disaster in that case. Current business process अगर flawed है, आपने उसी के ऊपर digitization कर दी, digital transformation will not help. If the end product is not responsive to user needs, आपने एक fancy application बना दी जिसको कोई यूज़ नहीं कर रहा, कोई product launch कर दी है even under single window जिसका uptake ही कम है, तो you need to look at it कि इसका uptake क्यों नहीं है. Awareness issue है, training issue है, या वो उस user की need को पूरा नहीं कर रही. And finally अगर इसका कोई sustainable governance and operating model नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी, आज सुबह भी मैं NDU में बात कर रहा था कि there are a lot of initiatives that governments take. नई वेबसाइट्स बनती हैं, पोर्टल्स बनते हैं, सिस्टम्स बनते हैं. आफ्टर 2-3 years वो गिर जाते हैं, फेड आउट हो जाते हैं. नो वन इज़ अपडेटिंग दैम.
डेटा आउटडेटेड है, डायनामिक नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है। हमारे केस में वी केम अप विद दैट सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। इस साल हमने गवर्नमेंट से फंडिंग लेने से रिफ्यूज़ किया है। वी आस्क्ड द गवर्नमेंट कि हमें आपसे फंडिंग नहीं चाहिए, हम अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को अपनी बजट से पूरा करना शुरू हो गए हैं। हम इस वक्त किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की पोजीशन में नहीं है। आई कांट एस्टैब्लिश माई ओन डेटा सेंटर विच इज़ मे बी $10 million project, but other than that we pay market based salaries to our employees. We have 3 offices, 2 in Karachi, 1 in Islamabad, very corporate. No naib cassettes, no clerks, no drivers. मेरे पास कोई इस तरह की गाड़ी नहीं है. We drive our own cars. We just pay closer to market salaries, and everybody just works hands on. But we also are earning our own money, so that is helping us being sustainable and gives us a lot of flexibility. अगर ये 5 चीज़ें आपकी पूरी नहीं होती तो आपका जो भी सिस्टम बनेगा वो एक फेल्ड एफर्ट होगी, कामयाब नहीं होगी. These are the guiding principles that I have adopted on single window, and so far it has been so good. Thank you so much for a very patient hearing.